हेलो एवरीवन। सो कैट 2024 स्लॉट 2 का ये दूसरा सेट है, ठीक है, जो कि आपका एक क्वांट बेस्ड एलआर है, ठीक है, एंड देयर आर सम मिसिंग नंबर्स ओवर हियर इन द ग्रिड। फाइन, चलो लेट्स गो टू द सेट। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 are placed in 10 slots of the following grid based on the conditions below. Okay, numbers in any row appear in an increasing order from left to right. तो ये एक आपको दिया गया डायग्राम, ये एग्जाम में दिया हुआ था, राइट? 10 slots. These 10 slots were provided, and in these 10 slots we have to fill in these numbers, that is 1 to 10. Okay, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया गया? नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस व्हाट? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस, एंड दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एवरी रो, ठीक है, ओके, फाइन फाइन। Numbers in any column appear in a decreasing order from top to bottom. Decreasing order from top to bottom. That means जो सबसे ऊपर है, that will be greater than the bottom one, right? So it will be something like this. This is greater, this is smaller. ठीक है? And it is in every column. It is in every column. So let's put it in every column. See, why am I using this greater than less than symbol? Things will be very clear. Things will be very clear. Don't keep it in mind. कोई भी कंडीशन हो आप नोटबुक पे उतार दो उसको, किसी ना किसी तरह नोटबुक पे उतार दो, राइट? इन द नोटबुक इन सम मैनर, ठीक है? Now if you observe the largest number, that is the 10, where can I have 10? Just focus. रो में इस तरह बढ़ रहा है, कॉलम में भी इस तरह ऊपर इंक्रीज हो रहा है. In row it is increasing in this fashion, column it is increasing in this fashion. Where will I have the greatest number or the largest number, that is 10? Obviously this is the position. This is the position where I can have the largest number, that is 10. You cannot have 10 anywhere else. Suppose you write 10 here. So you need to have a number here which is greater than 10, which is not possible. A good point. So the largest number, that is 10, has to fit into that position, So here I will be having 10. Clear? ठीक है, चलो let's move on. 1 is placed either in the same row or in the same column as 10. तो 1 10 वाले के same row में होना चाहिए या same column में होना चाहिए, and 1 is the smallest number, right? तो can I say either 1 can be here or 1 can be here? These are the only two positions, right? क्योंकि 1 is the smallest number and 1 should be in the same row or same column as 10. दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 यहां पे आएगा सबसे छोटे में, या फिर 1 यहां पे आ सकता है. Got it? चलो आगे चलते हैं. Neither 2 nor 3 is placed in the same row or in the same column as 10. So 2 3 cannot be here, 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 cannot be here. So for 2 3 we are having only 3 possible positions. These are the 3 possible positions. Fine. These are the only 3 possible positions for 2 or 3. Fine. Okay. Now let's understand one thing. 2 obviously cannot be appearing in this center value. इस बॉक्स में आपका 2 तो नहीं आ सकता, because you need something less than 2, which is 1. 1 यहाँ पे तो आएगा नहीं, 1 के लिए ऑलरेडी 2 जगह हमने फिट कर रखा है, right? तो now see here, 2 3 के लिए these are the 3 possible positions. Fine. I'm observing the middle position over here. Can I have 2? No, because I need some value which is less than 2, which is 1, and 1 cannot fit in there. 1 already assign हो चुका है either here or at the bottom. ठीक है, okay, तो मतलब बीच में 2 तो नहीं आया. अच्छा, can I have 3 here? हाँ, टू सम एक्सटेंड आपको लग रहा होगा 3 तो आ सकता है, क्योंकि 3 से छोटा 2 आ सकता है. बट ऑब्जर्व, देयर आर 2 पोजीशंस व्हिच आर लेस देन 3. देयर आर 2 पोजीशंस व्हिच आर लेस देन 3. तो ये दोनों पोजीशन जो है 3 से छोटे होने चाहिए, राइट? एक में 2 आएगा तो दूसरे में आपको 1 लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल यहां पे नहीं है. 1 ऑलरेडी
असाइन हो चुका है दूसरे दो जगह, 1 के पॉसिबिलिटीज दूसरे दो जगह पे हो चुका है. सो दैट मीन्स विच कंक्लूड्स हियर 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो यहां पे ना 2 आएगा ना 3 आएगा. तो मतलब 2 3 के लिए अभी दो ही चॉइस बचे हैं. इधर 2 विल बी हियर, 3 विल बी हियर, और 3 विल बी हियर, 2 विल बी हियर. दैट्स इट. 2 3 के लिए और कोई चॉइस आपके पास बचा ही नहीं. क्लियर. चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Neither 7 nor 8 is placed in the same row or in the same column as 9. ठीक है, ओके, विल कीप दैट इन माइंड. ठीक है, ये लिख देते हैं कि 7 8 जो है ना सेम रो में आएगा ना सेम कॉलम में आएगा एज कंपेयर टू 9. ओके, चलो. 4 and 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो. तो 4 6 क्या होना चाहिए? सेम रो में आना चाहिए, सेम रो में आना चाहिए. ओके. Now let's focus on 9. Let's focus on 9 and accordingly we'll do some trial and error for 7, 8, 4, 6. Okay, chalo. Let's observe. If I have 9 here, suppose I have 9 here, suppose. Okay. Now, okay, why am I assuming 9 there? You must be thinking, sir, कहीं और ले लो आप 9. 9 के लिए दो ही पॉसिबिलिटी हैं, 10 के बगल वाले दो पोजीशन. इधर 9 आपका यहां आएगा या फिर 9 आपका यहां आएगा. क्यों? क्योंकि 10 और 9 के बीच में कोई गैप हो नहीं सकता है. सपोज यू टेक 9 हियर, दैट मींस यू नीड टू हैव ए वैल्यू हियर व्हिच इज ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 10. डू यू हैव सच ए वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10? यहां पे लाने के लिए नहीं पॉसिबल है ना. सो दैट मींस 9 हैज टू बी समवेयर एडजेसेंट टू 10. 9 हैज टू बी समवेयर एडजेसेंट टू 10. 9 शुड बी हियर और 9 शुड बी हियर. गॉट इट. चलो हम पहले 9 को यहां लेकर ट्राई करते. चलो 9 को हमने यहां लिया. आई एम पुटिंग दैट इन सर्कल. इफ यू ऑब्जर्व, जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको मैं सर्कल में लिख रहा हूं. जैसे 1 हमने पॉसिबिलिटी हियर और हियर सर्कल में डाल दिया. 9 हमने यहां पे अज्यूम किया है. इफ आई टेक 9 हियर, तो व्हाट इट सेज, 7 8 9 वाले रो या कॉलम में नहीं आएंगे. ठीक है, तो 7 8 कैन नॉट बी हियर, 7 8 कैन नॉट बी हियर, 7 8 कैन नॉट बी हियर. ओके, दैट मींस फॉर 7 8 these are the only 3 possible positions. For 7 and 8 these are the only 3 possible positions, right? Okay. Now we also have a condition that 4 and 6 should be in the same row. Okay, now let's observe. Can 4 and 6 be in the last row? नहीं, वहां पे तो एक ही जगह है, यहाँ पे एक ही जगह है. दोनों कहां से आ जाएंगे? Can 4 and 6 be in row 3? No, because row 3 there is only one vacancy. अच्छा, can 4 and 6 be in row 2? No, because if I'm assuming 9 here, तो 4 and 6 के लिए एक ही वैकेंसी है. How can 4 and 6 be in the same row in the same, क्योंकि there is only one vacancy. That means if I'm assuming 9 here, 4 and 6 के लिए भी यही 3 जगह बाकी रह जाता है. So now think logically, if you're assuming 9 here, these are the only 3 possible position for 4 as well as 6 as well as 7 as well as 8. How can you fit in 4 digits or 4 numbers when you are having only 3 vacancies? Are you getting my point? So that concludes कि 9 उस जगह पे तो 9 उस जगह पे नहीं आएगा. Got it? So 9 जहां पे हमने assume किया है वहां possible नहीं होगा. So 9 will change the position. हमने conclude किया था कि 9 will be somewhere adjacent to 10. Okay? So that means we will take 9 here. Fine. Now we have to see कि 7 and 8 cannot be in the same row or same column as 9. So 7 8 cannot be here. 7 8 cannot be here. 7 8 cannot be here. Are you getting a point? तो 7 8 के लिए यही 3 possibilities बचे. Are you getting a point? But if you observe, 7 8 आएंगे तो 10 के बगल में ही आएंगे. Reason? Based on the same reason कि 10 के बगल में 9 आ रहा है. Because if you write 8 here, suppose you write here 8 here and 7 here, right? So you need a value which is greater than 8 and less than 10, जो कि 9 है, but 9 ऑलरेडी दूसरी जगह पे असाइन हो चुका है, तो यहाँ 9 तो नहीं आ सकता कि 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 तो नहीं आ सकता. Are you getting a point? Because 9 has already been assigned at a different position. That concludes 7 8 आपके 10 के बगल में बैक टू बैक आएंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा. क्लियर? ठीक है. So 9 7 8, I hope it is clear. अभी बारी है 4 6 का. We were informed that 4 6 should be in the same row. Now see, row 2 is having one vacancy, row 3 तो full हो चुका है, row 4 having one vacancy, row 1 having 2 vacancies.
दैट मींस 4 6 आएंगे तो कहां पे आएंगे, रो 1 में आएंगे, राइट? सो हियर आई लैव 4, हियर आई लैव 6, गॉट इट? दैट कंक्लूड्स हियर आई लैव 1, क्योंकि 1 के लिए दो ही ऑप्शन थे, इधर हियर और हियर, तो ऊपर तो 4 आ गया, तो ये जगह जो है ये 1 के लिए सही है। फाइन, नाउ विच इज द लास्ट नंबर रिमेनिंग जो हम मिस कर रहे हैं, 5 के रिलेटिव कंडीशन था नहीं, सो द ओनली वैकेंसी रिमेनिंग, वहां पे हम 5 को फिट कर लेते हैं। सो हियर 5, जस्ट क्रॉस चेक, इज इट सेटिस्फाइंग? इज 5 ग्रेटर देन 2 और 3? यस। इज 5 ग्रेटर देन 2 और 3? यस, राइट? जस्ट क्रॉस चेक कि आर द रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड कॉलम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? 4 6 9 10, यस। 2 और 3 5 8, यस। 3 और 2 7, यस। अच्छा, कॉलम चेक कर लेते हैं, 1 7 8 10, हाँ सही है। 3 और 2 5 9, बिल्कुल सही है। 2 और 3 6, बिल्कुल सही है। 4 7, तो एवरीथिंग इज सेटिस्फाइंग। नाउ हियर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी वेंट लॉजिकली कि 9 कहां आएगा, 8 कहां आएगा, 7 कहां आएगा, वी वेंट लॉजिकली, राइट? Many a times what happens, you start doing hit and trial from the very beginning. Now let's remember in these kind of grids या फिर मैट्रिक्स वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, try logic first. पहले लॉजिक से देखो क्या क्या हो सकता है। हाँ, where you feel no, अब कोई लॉजिक ना लगने वाला, अब तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, then you go start doing hit and trial. In these kind of questions, if you do hit and trial from the very beginning, it will take a lot of time. It will take a lot of time. Very good point. We use logic, it become very simple, very easy question. 5 very easy set, and there are 5 questions in your exam. There are 5 questions. ये set exam में I think 7 to 8 minutes लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता है if you go by logic. If you go by hit and trial, God knows how much time you will take. ठीक है? Okay, let's look at the questions quickly. What is the row number which has the least sum of numbers placed in that row? रो 4 ही होगा, क्योंकि 1 है सबसे छोटा, राइट? सो रो 4 इज हैविंग द लीस्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? अच्छा, मस्ट बी ट्रू बोल रहा है, ठीक है। 10 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 1, यस, डेफिनेटली ट्रू। 1 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 4, डेफिनेटली ट्रू, तो बोथ आर ट्रू। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? ओके, अगेन ठीक है। 2 is placed in a slot in column 2, नहीं, 2 का must be true नहीं है। 2 और 3 का सिनेरियो बन रहा है, तो 2 कॉलम 2 में भी आ सकता है, कॉलम 3 में भी आ सकता है, तो डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है। अच्छा, 3 is placed in a slot in column 3, नहीं, ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, राइट? सो योर आंसर विल बी neither 1 nor 2. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी? कितने स्लॉट्स हैं जहां पे डेफिनेट सिनेरियो नहीं बन रहा है? 2 ही स्लॉट है 2 3 के लिए, राइट? ओके, तो 2 स्लॉट्स। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4? सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4, कॉलम 4, ओके। 10 plus 8 18, 18 7 25, 25 plus 1 26. Okay, overall the scenario was easy, राइट? CAT 2024 स्लॉट 2 में ये सेट आराम से बन सकता था, there was no much of घिच-घिच, got it? चलो ठीक है, so have a good day, and just one information, I'm planning for a free live session, not on YouTube, either through Zoom or Google Meet, जो भी ठीक रहेगा, right? I'm planning for a live session, and I did place a poll where I have given the choices as arrangement, then Venn diagram, games, and 4 में हमने quant based LR दिया है, ठीक है? So these are the 4 choices that I have mentioned in the poll. The poll is available in my LinkedIn post, ठीक है? I will share the LinkedIn I will share the link to my LinkedIn page, right? So you can go to the LinkedIn page, or I will share the link to the LinkedIn post directly. So please, if you want to attend this free live session, do let me know through the poll कि आपको कौन सा सेशन करना है। काफी लोगों ने ऑलरेडी वोट किया है, आप भी जाके यहाँ पे वोट कर लो कि which session you want, क्योंकि कोई एक सेशन में लूंगा, I'll either through Zoom or through Google Meet, ठीक है?
लाइव लेने वाला हूं, कब लेने वाला हूं, आई विल डिसाइड, बट दिस पोल इज एक्टिव नाउ फॉर फ्यू डेज. So based on the result of the poll, I will decide which topic, right? And once the topic is ready, so we'll have a live session and we'll have a one-to-one interaction. ठीक है, तो आप लोगों के साथ पहली बार मुलाकात होगी. ठीक है, चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर वोटिंग्स. आई विल बी शेयरिंग द लिंक्डइन पोस्ट लिंक इन माय कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो, हैव ए गुड डे.